see what I will be discussing in the class. Okay. It will be, you can say, the most effective way to remember the topic. कहीं ना जहाँ मु क्लास रे डिस्कशन क्लास रे कहिबी, that will be the content, facts, data, concepts will be much more than what we will be giving by the way of model answer. Model answer रे जहाँ अछि क्लास रे बहुत जिनस को हाव. ओके, से सब जिनस मॉडल आंसर रे बुझे होबनी कि सब जिनस सेम प्रेजेंट करि होबनी कि लिखि होबनी. सो जहाँ क्लास रे कहबी नोट डाउन करो एंड सेम थिंग पढ़ी के जाओ. तापर मॉडल आंसर जो दिया हो फोपाड़ दे पड़ाओ, दरकार नहीं. ओके, योर नोट शुड बी रेडी एट द लास्ट मिनिट फॉर रिविजन. सेतिकी दरकार. आई नीड कि जहाँ क्लास रे मुझे डिस्कशन क्लास रे कहूँ जी जमती कहूँ सेमती मन रख, से वे रिप्रेजेंट कर, से वे एग्जाम लिख. जहाँ मॉडल आंसर दिया हो, जो आंसर पीडीएफ दिया होता खाली पिला मन बुझाई दिया हो. लास्ट 2 वर्ष आम किसी देनु. तो जहाँ डिस्कशन क्लास रे कहबी मॉडल आंसर सब किसी नथिबो. ठीक अच्छे. सो डिस्कशन क्लास रे जहाँ कहबी नोट डाउन कर दियो, सेतिकी पढ़ो, से पीडीएफ दरकार नहीं. ओके, तो let us discuss the question number 6, 15 marker. Okay, चलो क्वेश्चन नंबर 6 आज हिंदू रे आर्टिकल आसला. ओके, से पॉइंट भी मु इंक्लूड करछि आज डिस्कशन रे. क्लास रे जोटा ग्रुप रे पोस्ट करथिले कि हिंदू रे आज गवर्नर के ऊपर ओटा आर्टिकल आछि, तो तार पॉइंट भी इंक्लूड करछि डिस्कशन रे. कौन सीजीआई कहले एंड व्हाट सीजीआई सजेस्टेड से जो इशू पाई कि जो गवर्नर जहाँ भी इशू अच्छी, तो सीजीआई सजेशन कौन देते सेटा भी गोटे आम आंसर रे लिखि परिबा. ठीक अच्छे. ओके, ठीक अच्छे. क्वेश्चन नंबर 6, जस्ट all of you can see the screen, kindly confirm. ओके, ठीक अच्छे. डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म भीतर कौन कौन पढ़ा को पड़ो. ओके, ठीक अच्छे. डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म आम गोटे डिस्कसन करिया. लोक अदालत यूपीएससी रे गोटे क्वेश्चन एथर पड़ता. डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी फ्री लीगल एड, सेटा गोटे पोटेंशियल क्वेश्चन. ठीक अच्छे. आम डिस्कसन करिया एडीआर माने एडीआर गोटे पार्ट जोटा कि लोक अदालत पढ़िबा. ओके, ठीक अच्छे. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 says critically examine the role of governor as an agent of the center rather than being the constitutional head of the state. In this context of recent controversies involving the post of governor in India. Okay, so आधर गोटे छोटिया इंट्रोडक्शन दबार अच्छी कि गवर्नर को रोल केमती आमर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी रे गवर्नर को रोल कौन. गवर्नर प्लेज ए डुअल रोल. डुअल रोल कौन? एज एन एजेंट ऑफ द सेंटर एंड हेड ऑफ द स्टेट. ठीक अच्छे. बेसिक इंट्रोडक्शन एति लिखार अच्छी. यू कैन राइट the role of governor. All these things are mentioned in the part 6 of the constitution. You also can write that, or you can just write that the governor plays a dual role in Indian constitutional scheme, simultaneously being the agent of the center and the head of the state. Beautiful, simple introduction. Okay, then come to the your issues. बहुत पिला 6टा 5टा 4टा पॉइंट लिखछन्ती. I will tell you minimum 10 issues. Okay, 10टा इश्यू जोटा कि गवर्नर सहित रिलेटेड. ओके, एंड दैट हैव बीन इज न्यूज इन सम और अदर डिफरेंट स्टेट रे सेटा न्यूज रे ऑलरेडी अच्छी. ओके, सो आफ्टर इंट्रोडक्शन देन डायरेक्टली कम टू द बॉडी दैट इश्यूज. ओके, इश्यू नंबर 1. ओके, अपॉइंटिंग और यू कैन से इन चूजिंग द चीफ मिनिस्टर. In choosing the chief minister when no party gets the majority on the floor of the house. Okay, ठीक है. चलो, और after the election you can write on the floor of the house नहीं तो after the election. Okay, in choosing the chief minister कहना से अपन तो floor of the house को क्या ऐसा था. तो in choosing the chief minister when no party gets the majority. Okay, that is the description. Second, that जितने बड़े majority test हुए in testing the majority. Okay, in testing the majority on the floor of the house. एठी को एटा केमती होची. how discretion is used here. Discretion एत पे यूज होची कि governor knows that one party has no majority, okay, or short of majority.
one party falls short of majority. In spite of that, governor don't insist that party to come to the floor of the house and prove the majority. Insist karanti nahi. Even there have been instances where the Supreme Court has forced the floor test कि floor test टा हो कहीं ना से पर्यंत floor test है न थाए. So this is also coming under the discretion of the governor. Okay, point number 3, that dismissal of the CM, dismissal of the chief minister in constitution. Second point कहली कि टेस्टिंग द मेजोरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहीं ना जे पर्यंत गवर्नमेंट तो फॉर्मेशन हो गला बट गवर्नमेंट फॉर्मेशन पर मेजोरिटी टेस्ट हुए ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो जदि गोटे कोआलिशन गवर्नमेंट फॉर्मेशन होईची ओके कहीं ना मेमोरेंडम रे जेतेबेले दियंती माने कोआलिशन गवर्नमेंट और पार्टी माने दियंती कि हमर एतिक मेंबर अछंती वी आर गिविंग यू द लेटर ऑफ सपोर्ट टू दिस पार्टी एंड वी आर चूजिंग दिस पर्सन एज आवर लीडर. एतिक हो गला पर गवर्नर इनवाइट कर दियंती लीडर ऑफ द माने कोआलिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट. फ्लोर टेस्ट पर हुए ठीक अछि. तो से फ्लोर टेस्ट केते दिन पर हबो दैट डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नर. तो एमती इंस्टांस है कि फ्लोर टेस्ट 10 दिन है कि 15 दिन है माने पूर्व अन्य अपोजिशन पार्टी जी थे दे गो टू द सुप्रीम कोर्ट कि मानकर मेजोरिटी नहीं बट स्टिल दे आर इन द गवर्नमेंट एंड फ्लोर टेस्ट इज नॉट बीइंग कंडक्टेड. फ्लोर टेस्ट होनी. तो देयर हैव बीन इंस्टांसेस वेयर सुप्रीम कोर्ट हैज फोर्स्ड द यू कैन से गवर्नर टू कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट. एबे बुझ पारलो कि से 15 दिन चाहिए डिले कर दे परिवे फ्लोर टेस्ट ता भीतर हॉर्स ट्रेडिंग भी हो जाय परिवो. ठीक अच्छे. तो यहीटा गोटे गवर्नर गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी थाए टू कंडक्ट द फ्लोर टेस्ट एज अर्ली एज पॉसिबल बट मेनी इंस्टांसेस से जिनसा हुए से सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन दरकार पड़े बेले बेले. ठीक अच्छे. एबे बुझ पारलो. फर्स्ट पॉइंट हैपेंस आफ्टर द गवर्नमेंट टेक्स ओथ एंड दिस पॉइंट हैपेंस बिफोर टेकिंग द ओथ. बुझ पारलो. मेजोरिटी टेस्टिंग हुए गवर्नमेंट ओथ दे सारा पर सीएम चूज करा जाए ओथ नवा पूर्व सीएम चूज कला पर ओथ तापर मेजोरिटी टेस्टिंग हुए फ्लोर ऑफ द हाउस रे. बुझियला. ठीक अछि. देन डिसमिसल ऑफ द सीएम. देखो देयर इज नो क्लियर कट यू कैन से प्रोसीड्यूर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डिसमिसल ऑफ द चीफ मिनिस्टर. इट कंप्लीटली ऑन द प्रेरोगेटिव इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द गवर्नर कि डिसमिस करि परिबे नाही. बट सेटा पछरे माने जुडिशियर रे whether that will pass or fail that is a different thing but सेटा किसी क्लियर कट प्रोसीड्यूर नाही and that there comes the role of the discretion of the governor. Okay, point number 3. Okay, point number 4. Point number 4 is yes नहीं डिसमिसल ऑफ द सीएम रे सेमती माने किसी क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट कहि पर कॉन्स्टिट्यूशन सेमती किसी प्रोसीड्यूर नाही सीएम डिसमिसल रो. ठीक अछि. सेटा डिस्क्रिप्शन अछि गवर्नर को. देन डिसॉल्विंग द लेजिस्लेटिव असेंबली. ओके these are two different things. CM dismissal and dissolving the legislative assembly, it are different thing. Okay, ठीक अछि. So that is also a issue of you can contention. Okay, then 5 in recommending the president rule. Okay, recommending the president rule जहाँ भी अच्छी आमर breakdown of the constitutional machinery सेतेबेले गवर्नर रिपोर्ट देबे एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर प्रेसिडेंट रूल विल बी इम्पोज्ड. तो से केस रे डिस्क्रिप्शन काम करे बहुत. ठीक अछि. देन वी कैन से रिजर्विंग बिल फॉर consideration of president. Okay, consideration of president, that is one issue. Then 7 nomination of the members to the legislative council. आमर तो नहीं बड़ अलग जगह अछि. nomination of members to the upper house. Okay, or legislative council. ठीक अछि. तो एटा completely depend of the discretion किए जीवो. Next, then आउ गोटे डिस्क्रिप्शन अच्छी कि एज ए चांसेलर ऑफ द यूनिवर्सिटी. चांसेलर ऑफ द यूनिवर्सिटी एटा कोडी न्यूज रे थिला एबे आई वुड से दैट इन लास्ट यू कैन से ईयर
yes, West Bengal एटा न्यूज रे थिला ए पॉइंट टा ठीक अछि. सो मेनली तमे जदि देखिबो न्यूज रे अछि दिस पॉइंट माने रिसेंटली कंट्रोवर्सी अछि, प्रेसिडेंट रूल कंट्रोवर्सी अछि, ओके, टेस्टिंग द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एटा अछि, all these things are there, okay, but एटा consideration of reserving bill for consideration president, that is also yes. तापरे नेक्स्ट जिंस को दे पारे बहुत बढ़िया ठीक अच्छे. प्रेसिडेंट रूल रिकमेंडेशन छत्तीसगढ़ आमर ये हिमाचल प्रदेश और यू कैन उत्तराखंड रे होता ठीक अच्छे. नेक्स्ट आउ गोटे जिन हूँ कि आज जोटा थिला कि यस कह से शुण सबू से एड ऑफ एडवाइस रे करेंगे बट जिनस हूँ कि दैट इज वन इश्यू माने जोटा कि माने दैट क्रिएट कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर ठीक अच्छे. तो कहीं ना दिस लक्ष्मीकांत देखिए जाए गो एंड चेक लक्ष्मीकांत ओके जो 8टा पॉइंट कहली लक्ष्मीकांत क्लीयरली लिखाई ओके इश्यूज सराउंडिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर. आउ 2टा पॉइंट तुम ऐड करिवो लक्ष्मीकांत लिखाई जोटा कि आज ग्रुप रे शेयर करथिली कि जोटा चीफ जस्टिस कहथिले कि डिलेइंग द क्रुशियल बिल्स ओके डिलेइंग द क्रुशियल बिल्स आज जोटा कहथिले जहाँ कहली अप टू 1 to point number 8 एवरीथिंग मेंशन इन लक्ष्मीकांत किसी बाहर कहूनी डिलेइंग हाँ कह हाँ दे कहीं दे माने देखो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन आल्सो फ्लोज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन ठीक अच्छे. तो से माने सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन टा होची कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन रा गोटे कॉन्सिक्वेंस तांकर डिस्क्रिप्शन तो से निजे आनु ना दे कॉन्स्टिट्यूशन रो ही सेटा आसी. तो एवरीथिंग जहाँ भी डिस्क्रिप्शन अच्छी सेटा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑलरेडी करी सेति पई ही इज एन्जॉयिंग द डिस्क्रिप्शनल पावर ओके. सो डिलेइंग द क्रुशियल बिल ओके डिलेइंग द क्रुशियल बिल माने सिग्नेचर न करवा तो यहाँ गोटे मैटर. तो आर सॉल्यूशन नेक्स्ट पॉइंट लिखि पारियो कि सेठी गोटे चीफ जस्टिस जो आर्टिकलटा पठाइथिले ग्रुप रे फोटो सेठी गोटे चीफ जस्टिस गोटे बढ़िया कथा कहउछन्ती से कहउछन्ती कि लिखा है द मैटर्स मस्ट बी सॉर्टेड आउट बिटवीन देम एंड द सीएम्स. तो मैं सॉल्यूशन लिखि पारियो कि ए जो जिनसटा रहउची आर सॉल्यूशन एटा हे पारियो कि ए जो डिलेइंग द क्रुशियल बिल दैट शुड बी सॉर्टेड आउट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द कंसर्न गवर्नर ठीक अच्छे ओके. देन अनदर इशू you can say arbitrary removal of the governor, also you can write arbitrary removal of the governor, although though not directly related the governors, no fixed tenure you can write okay. So these are the 10 issues where you can find controversy regarding the office of the governor okay. So then way ahead go कह हाँ सेटा भी लिखि पारियो that is also that also you can write okay. Dismissal of the CM and you can add here also very good point. Removal of council of any member of the council of minister okay. These are the 10 points. Then way ahead you all know that you have to write जहाँ भी way ahead लिखुचो you have to write the recommendation of Sarkaria Commission, recommendation of Punchi Commission. Definitely ना लिखे पड़ियो. Without mentioning the name, answer will be incomplete. Okay. So first होची non-political appointee. Non-political appointee. Okay. Governor should be non-political. Point number 1. Then you can write about Sarkaria Commission recommendation, Article 356. Okay. That you can say they recommended that Article 356 should be used sparingly with sufficient reason, with sufficient you can say evidence, with sufficient circumstance. If such a circumstance is there, then only president rule can be imposed. Article 356 should be used in a very rare cases when there will be unavoidable breakdown of the constitutional machinery of the state. Okay, simple. Third,
what Punchi commission recommended that भाई sparingly सरकारिया कहले कि तुम 356 को sparingly यूज करो पुंची कमिशन कहले भाई तुम गोटे काम करो 355 और 356 को amend कर दियो ओके amend करो to protect the interest of the states okay to protect the interest of the state okay ठीक अछि then appointment of the governor another point appointment रे non political appointment तो सेटा गोटे point ओके अपॉइंटमेंट रे गोटे नेशनल पैनल करो ओके नेशनल पैनल शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर इन्वॉल्विंग द अपोजिशन रूलिंग पार्टी जहाँ सिविल सोसाइटी ओके जुडिशियरी एंड द कंसर्न चीफ मिनिस्टर शुड बी कंसल्टेड बिफोर अपॉइंटिंग ए गवर्नर टू ए पर्टिकुलर स्टेट ओके देन फ्रेमिंग ए कोड ऑफ कंडक्ट कि गवर्नर केमिति काम करिवे कहीं जेहेतु कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन अधिक अच्छी we need to frame a code of conduct okay and that should be approved by the state governments and the central government state government are at the receiving end code of conduct should be approved by the state governments and the central government आ गोटे solution कहले कि जो reserving जो bill अच्छी reserving bill or delaying the bill in particular that issue should be sorted out between the concerned chief minister and the governor ठीक अछि okay so these are the ठीक अछि time period that also you can write okay and conclusion तुम लिखि परिबे कि constitutional democracy रो फंक्शन पई गवर्नर को रोल होची indispensable okay ता गोटे तांको फिक्स टेन्योर दिया जाऊ तांको पई गोटे माने इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से काम करा दरकार ए सब जिंस लिखि कि यू कैन कंक्लूड ओके लास्ट पॉइंट जदी डिलेइंग द बिल होची ना आज जोटा पठैतली फोटोटा से लिखा हिची छोटा लाइन लिखा हिची सीजीआई कहछंती कि डिलेइंग द बिल सॉल्यूशन होची आमे तो किछि करि परिबोनु दैट शुड बी सॉर्टेड आउट बिटवीन द कंसर्न गवर्नर एंड द कंसर्न चीफ मिनिस्टर तांको भितरे माने म्यूचुअली दैट शुड बी सॉर्टेड आउट ठीक अछि ओके then question number 7 हाँ कुह डाउट कौन कुह शुण क्रिटिकल एग्जामिन कहले भी शुण ये क्रिटिकल एग्जामिन तुम कौन कल तुम पॉइंट आउट कल व्हाट आर द डेफिशिएंसीज तापर तुम पॉइंट आउट कल व्हाट आर द सॉल्यूशंस सो दैट विल टेक केयर ऑफ द क्वेश्चन तुम जोटा कहल डोंट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को केबे हेले आंसर रे डायरेक्टली ब्लेम करनी ठीक अछि कॉन्फ्लिक्ट थाई पारे बुझेला कॉन्फ्लिक्ट थाई पारे बट गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को केबे हेले डायरेक्टली ब्लेम करिवो नाही तुम जो कहछ कि ही शुड फॉलो द माने प्रोसीड्योर कि ही इज नॉट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ओके हाँ ठीक है सेटा मु कहली ना कि कहली कि द रोल ऑफ गवर्नर इज इंडिस्पेंसिबल for the functioning of the constitutional democracy and he is a vital link between the center and the state and he can be an effective agent to promote the cooperative federalism also एमती लेखि कि कंक्लूड करो हला ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट बड़ा क्वेश्चन इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट बहुत इंपोर्टेंट इश्यू it has been asked in UPSC previously in I think is 2012 or 13 पढ़ी ता भीतर पढ़ी थो but I remember that it was once asked in 2013 or 12 okay so interstate river water disputes have remained a contentious issue post independence briefly discuss the constitutional and legal provisions in this regard what are the issues associated with interstate river water dispute question केतरा पार्ट अछि question first part अछि कि what are the constitutional provisions in this regard and what are the legal provisions in this regard okay
Then next you have to write what are the issues associated with interstate river water disputes. ठीक अछि. So first let us come to the constitutional provisions. Okay, constitutional provisions, you must have to write the name of the article, that article 262. एटा न लिखले मार्क मिलिबो नाही, because article 262 okay तार पर्पज कौन थिला, पर्पज होची adjudicating. Just write these terms, that adjudicating the dispute related to interstate river valleys. ठीक अछि, adjudicating the disputes related to interstate river valleys, and by taking power from the article 262 government has enacted two laws. आम आसिले legal provision को, first constitutional provision देखिले, तापर आसे legal provision को. By using article 262 the government has enacted two laws. One law is River Boards Act, BOARDS, River Boards Act 1956. Then Interstate River Water Dispute, Interstate Water Dispute Act, Interstate Water Dispute Act 1956. Okay, River Boards Act और Interstate Water Dispute Act भितर difference कौन अछि. River Boards Act it enables the union government कौन करिवो, it will create boards for interstate rivers. Okay, boards for interstate river in consultation with the state governments. ठीक अछि, but unfortunately till now no interstate board has been constituted. Then come to Interstate Water Dispute Act. ठीक अछि, Interstate Water Dispute Act रो प्रोविजन कोन मु स्टोरी करी कहि दोछि, मन रहि जिवो, लेखिले मन रहबनी. फर्स्ट जदी सपोज ओडिशा और छत्तीसगढ़ महानदी रिवर वाटर डिस्प्यूट अछि, सपोज मु आई एम द अग्राइव्ड पार्टी, जे मु कहली कि छत्तीसगढ़ मते पानी देलान. ठीक अछि, आई एम द अग्राइव्ड पार्टी, आई विल गो एंड अप्रोच टू द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेस, और एबे जोटा कहउछ हम जल शक्ति. ओके, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मु जाई के अप्रोच करबी. ठीक अछि, अप्रोच कला परे तार आईएसडब्ल्यूटी एक्ट रो प्रोविजन मन रखि एमते लिखि देले भी एग्जाम रहबो. तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को जण अप्रोच करबो जाई कि गोटे स्टेट, तो ए माने कोन करिवे, ए माने ताको भीतर गोटे नेगोशिएटर अप्लाई करिवे, नेगोशिएटर अपॉइंट करिवे, नेगोशिएटर जे कि दुईटा पार्टी भीतर नेगोशिएट करिवो, ओडिशा छत्तीसगढ़ डाकी कि नेगोशिएट करिवो. ठीक अछि, नेगोशिएशन भीतर जदी सक्सेसफुल हेई गला, डिस्प्यूट रिजॉल्व हेई गला, वेरी गुड. जदी न हैला ताहाले द मिनिस्ट्री will constitute a tribunal. Okay, ministry will constitute a tribunal, जोटा कि हमरो ओडिशा छत्तीसगढ़ रे महानदी ट्राइब्यूनल ऑलरेडी constitute हेछि. Okay, so tribunal, there is no time limit defined